कैसा लग रहा है बॉडी? बहुत बढ़िया। गुड। अभी देखो थोड़ा फॉलोअर गेन करने का निंजा टेक्निक दिखाएं। What is up guys? Welcome to a brand new YouTube video. I hope you guys are doing absolutely fine. तो यार ये वीडियो में ना मेरे को आपसे एक चीज शेयर करना है, ठीक है? I want to show you guys something and something which I have built and this is something which is really special क्योंकि this is obviously related to my professional life and more importantly this is something which was only possible because I worked so hard on my business and I did this purely from the returns that I got from my business. Didn't ask a single penny from anybody, didn't ask anybody for any help and I'm really happy that I've made it to this level. So I'll show you what I'm talking about. तो यहाँ मेरे लैपटॉप पे मेरा वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है एंड ये नया मैंने एक मॉनिटर अपने लिए खरीदा है। यहाँ मेरा सारा मैं बिजनेस का काम करता हूँ। बेसिकली आई हैव अ डुअल स्क्रीन सेटअप नाउ एंड आई ऑल्सो हैव अ 2 phone सेटअप। आई एम रियली लविंग इट एंड यहाँ पे बैठ के ना ब्रो अब काम करने में मजा आ रहा है। अब मुझे ना फील आ रहा है कि भाई अब मैं एक सीईओ बन चुका हूँ, ठीक है? सीईओ। अब वो सीईओ वाला वाइब आ रहा है मेरे को। तो यू नो आप लोगों को लगेगा कि शो ऑफ कर रहा है, शो ऑफ मार रहा है। शो ऑफ नहीं मार रहा, बट दिस इज यू नो समथिंग व्हिच आई रियली वर्कड हार्ड फॉर। आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन जून एंड ओनली आई नो मैं इस लेवल पे कैसे पहुंचा हूँ। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई हैव वर्कड 14 hours, 15 hours, I have had sleepless nights and it's, you know, really nice when you see that you are getting that returns and it's not just in the bank account but it's also, you know, visible. I'm able to buy watches, I'm able to invest in all of this stuff and I'm able to upgrade my tech, I'm able to upgrade my setup and this just, you know, feels very nice, right? That you are slowly but gradually you are, you know, making it in life. And इससे अच्छा कोई फीलिंग नहीं हो सकता। तो यू नो थैंक यू टू ऑल माय एक्टिव क्लाइंट्स एंड माय प्रीवियस क्लाइंट्स हु हैव यू नो सपोर्टेड मी ऑन दिस जर्नी, हु हैव हैड अ you know transactional relationship with me and it is only because of them that they have showed their support. You know, it makes you feel very satisfied, very fulfilled from inside that yes, you are doing something you love, which you always wanted to do and what once seemed like a dream is actually your reality right now. तो एक टाइम पे मैं बस देखता रहता था कि भाई बड़े बड़े सीईओज हैं, कंपनी के मालिक हैं, 2 3 4 स्क्रीन लेके बैठे हैं एंड मैं सोचता था ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि इतना ये लोग लेके बैठे हैं। सो देन यू नो अब मैं भी उस लेवल पे थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा हूँ, तो it feels really nice, you know. I think this is something you guys should be inspired by. But I've seen this man work and work and work. You guys are thinking this is just one video series, but he's been making content for years now. 4 years. And 4 years. You can check out his profile. 800, 900 videos he has put. It's not a matter of one day, but if you look at his work ethic, this is something I am getting inspired by, and you all should too. To add to that, a lot of people who get this much of huge bump is just in one go, who get a lot in one go, they get very giddy. Yes, yes, yes. I'm not getting giddy. I don't even care because this is something I know I deserve. I deserve, I got it, and now I know that, you know, I'm good. Congratulations for 100K. Today we have a pull workout. Back, bicep, rear delts and traps. Not many exercises, 2 exercises for one body part, just enough. And today we are training with my friend Rangeet Rahil. He's also a coach. I am also a coach. Offline, online, junior, senior. So during my workouts, I don't really like to talk at all. This guy works out with me, he knows. अभी तो कैमरा चल रहा है, थोड़ा बात करना होगा, लेकिन जब कैमरा ऑफ रहेगा इससे पूछो हम कैसा वर्कआउट करते हैं। 1 hour in and out of the gym, done. 1 hour 60 minutes। हमको उससे ज्यादा जिम में रहना अच्छा ही नहीं लगता। हम तुमको सीरियसली बताएं, हम 9 साल से चीज कर रहे हैं। आज का डेट पे हमको जिम आने का एकदम मन नहीं करता, बट दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डन एंड सिंस आई कम हियर, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है वर्कआउट करने का, जिम रैट ये वो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। It needs to be done. I get it done. I come here, I get it done. No excuses. 60 minutes, job done, finished. So again, like 2 pieces to the puzzle. Like on the contrary, if I get a day off, I really enjoy my training 2.5, 3 hours. I love staying in the gym. But whatever helps you stay consistent in the long period of time, be it longer workouts, shorter workouts, what matters is consistency over a long period of time. And I, on the other hand, I really enjoy my rest days. I really look forward to days when I play sports. अभी पिछला 3-4 दिन में रोज 30,000 40,000 फॉलोअर मेरा भाग रहा है। एक नया सीरीज अपलोड कर रहा है, बूम कर गया, भाग रहा है, इट्स वैल्यूएबल कंटेंट, राइट? तो आज सुबह से मेरा बिजनेस नंबर इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाला हुआ है। सुबह से इतना ब्रांड हमको फोन कर रहा है ना,
हम फोन उठा रहा है, टॉक टू माई मैनेजर, फोन रख रहा है, मैनेजर कौन है भाई, मैनेजर तो है ही नहीं मेरा मैनेजर है कौन है, लेकिन क्या है थोड़ा इमेज मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से खेलो भाई, all business, all business. I always start my pull workout with pull-ups and I love pull-ups. For me, मेरा back बहुत strong है and it is, I have a very huge back and the number one reason why I have that is because of pull-ups. I do pull-ups on every of my back session. People don't like to do pull-ups. They say कि pull-ups नहीं करके हम lat pull-downs मारेंगे. Lat pull-downs भी मारना है, लेकिन pull-ups मेरे हिसाब से काफी important exercise है. Then drop it down, bang out another few reps, then drop it down once more, which will make it a double drop set and train my muscles to absolute failure. अरे then go ना. Stop talking triple. Go right now. Rest over. अरे rest. अरे अभी हम देखो कुछ बोलेंगे कैंसिल कर देगा. No rest. Let's go. No rest. Rest क्या होता है? Pucce sir, Pachi. Five. Let's go. 6, 7. Hold. Hold here. Down. Up. Hold here. Hold here. Down. Hold. 1, 2, 3. क्या हुआ? Drop हो रहा है. ड्रॉप हो रहा है. अरे ये देखो, ये ड्रॉप हो रहा है इसका. 2, come on, bang some reps. 6, नीचे आओ. 7, नीचे आओ. Right. 8, come on, cover. डबल ड्रॉप था तो. Let's go. 1, give me 25. Tempo. Give me 25 fast reps, bro. Come on. 3, 4, 5, 6. नीचे आओ. 7, 8. Come on. Come on. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Come on. 5 more. Come on, bro. 1, 2, hold. Push. 3, hold. Come on, one more. One last rep. Nice. Now we are talking. कितना देर पकड़ के रखे बोलो? ऐसा लग रहा है. So, being someone who always trains on my own, sometimes for a change, it's good to have a partner alongside who's equally as crazy, who's going to push you till beyond failure. And this holds true for everything in life. Yeah. Surround yourself with like-minded people who have a similar vision to you. Not like-minded. If you're a loser and if you surround yourself with like-minded, you're going to be surrounded with losers. Right. Always surround yourself with winners. That's Right. how you become a winner. And if you want to be a winner, you choose to stay in that winning circle. It's important to stay in the circle of winners because that's how you get motivated to push more, be better, and do better. अरे यार अभी ये लोग भी सलाम आता सारा. अरे क्या भाई इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया.
ऑन कैमरा रिफ्रेश मारेंगे। साला बेइज्जती हो गया, हमको लगा रिफ्रेश मारेंगे 100K हो जाएगा, बेइज्जती हो गया। अब 5 मिनट बात करेंगे या फिर ये क्लिप को वापस से रिकॉर्ड करेंगे, हीरो बनेंगे। ये देखो रिफ्रेश मार रहे, देखो 100K हो गया, लेकिन असलियत हमको पता है क्या है। तो मैजिक देखेगा रंगीन, इधर आ, तू भी देख देख, अभी रिफ्रेश मारेंगे, देखना नंबर चेंज हो जाएगा। 100K। Congratulations. Thank you. Can't say I don't deserve it. Obviously I do. Thank you to everybody for all the support and love. Again, like I mentioned earlier, if somebody should learn from this, it's perseverance, hard work, and when life puts you down, not to get deeper, like walk down by that, but to make the most out of your situation, so you can come out on top like this man is right here. So, a lot of people out there will tell me overnight success, 4 years of hard work. 4 साल से जो कैमरा पे आप अभी देख रहे हो ना, इतना फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लगता मेरे को। ये जो आप देख रहे हो ना, 4 साल का मेहनत है इसके पीछे। 4 साल से कैमरा के सामने बात कर रहे हैं। उस टाइम किताब लेके पढ़ते थे। हाय गाइस व्हाट इज अप, हाय गाइस व्हाट इज अप, हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो। दिस इज केतन आहूजा। डन, बूम, 4 इयर्स मेहनत, बट तुमको लगेगा ओवरनाइट है। अब 100K हुआ, अब तो पार्टी बनता है सर। पार्टी किस चीज का? Celebration किस चीज का सेलिब्रेशन? of what you have achieved, milestone. What have I achieved? It's 100K numbers on the screen. What is this? You open your bank account. What is that? Numbers on the screen. You don't celebrate all that. You buy a car, you celebrate. You buy a house, you celebrate. 100K. You are getting to touch lives. 1 लाख लोग, अभी सोचिए हम लोग 2 लोग हैं, बढ़िया यार। 1 लाख लोग ऐसे खड़ा हो गए। मेरे को देखो 1 लाख 2 लाख से मेरे को मतलब नहीं। अगर हम एक जन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई घर से उठो और जिम जाओ और मेहनत करो, मेरा काम हो गया। 1 लाख हो रहा है, गॉड इज ग्रेटफुल, गॉड इज काइंड। लेकिन अगर एक बंदा को भी हम कर दिए, मेरा गोल कट। इसका भी वही गोल है, एक बंदा को भी अगर चेंज कर दिए, गोल कंप्लीट हो गया। लेकिन सिंधी आदमी देखो हम बात कर रहे हैं, 100K फॉलोअर से हमको कुछ नहीं मतलब है, 1 लाख रुपया से हमको मतलब है। फॉलोअर से क्या होगा भाई? After every single video that you watch, you should leave learning something. And in today's learning, happy to chance upon Ketan sir at the gym. We watched his 100K celebration. And again, like if you should learn something, you tuned into the video, you wanted to learn about nutrition, you wanted to learn about training, right? But if I want you to leave with something out of this video, it will be to leave with a mindset, with a champion mindset. And a prime example, I'm getting inspired as well seeing this man. Like we've done podcasts way back on the channel, we have done videos way back on the channel. From there, like to see his meteoric rise, which he truly rightly deserves. So this should be a learning for you as well, that if you are struggling out there, if you are struggling with that one rep, if you are struggling with trying to put out one content over there, never get bogged down. It's all in the mind and success is inevitable. I'll tell you just one quote, which I also tell to a lot of my clients who get demotivated at times, who say that I'm not seeing results and stuff. There is always a tomorrow, but all you have is today. How you interpret it, that's on you. If you got the meaning which I'm meaning it, जैसे मैं मीन कर रहा हूँ, drop it in the comments and I'll see the comments. अगर मेरे को लगा कि भाई तू मेरा जो मैं मीन कर रहा हूँ, तू actually उसको क्रैक किया, I'll reply to that. I'll give you a personal follow on Instagram. That's my promise to you. But you have to crack the code. So I'm repeating the code again. You always have tomorrow, but all you have is today. तो आज से ना 1 साल पहले फरवरी में 7 फरवरी टू बी एग्जैक्ट, मेरा एक बहुत ही भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दैट, जो कि बहुत टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है ऑन यूट्यूब। तो ड्यूरिंग दैट टाइम नो, इट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने उस टाइम एक कोट बोला था, दैट द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। पता है लोगों ने क्या बोला? ये सब कोटबाजी करके कुछ होगा नहीं। तुम्हारे लिए आज भी वो कोट है, आज वो मेरा रियलिटी है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम बस मुंह चलाते हो और मैं हाथ चलाता हूँ। तो मैं तुमको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। मैं बेड पे लेटे लेटे भाई मैं जब बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, तो भाई तुम तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो भाई, तुम सोच रहे हो। सो विद दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। अगेन आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, आई रियली वांट यू टू टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर। भाई अगर मैं बेड रेस्ट पे रह के भी मैं ये सब कर सकता हूँ, यू बेटर बी श्योर कि भाई तू कुछ भी कर सकता है। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, मैंने क्लास 11 रिपीट किया है, तूने नहीं किया। आई एम अ फेलियर, यू आर नॉट। सो इफ अ फेलियर कैन डू सो मच, यू आर नॉट अ फेलियर मैन। तू क्या कुछ नहीं कर सकता है।